Good evening, good evening, good evening. Welcome to StockAdda with Janak. सैटरडे नाइट धन की बात लाइव स्ट्रीम्स दोस्तों. हमारे वीकेंड एक्सक्लूसिव कनेक्ट में मेरे सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स, फर्स्ट टाइम व्यूअर्स, रिकरिंग व्यूअर्स आपका हार्दिक स्वागत है. फटाफट नीचे मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताइए इफ माय विजुअल्स एंड ऑडियो आर प्रॉपर. अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है एंड माय स्क्रीन इज प्रॉपर देन वी कैन कमेंट्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड लाइव स्ट्रीम आज मैं आपके साथ लाया हूं. लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन लास्ट 3-4 डेज. वॉर हो गया, आई गेस, मतलब, एंड देन सीज फायर जस्ट वन एंड हाफ आवर अगो. नॉट मेजर चेंज इन कंटेंट टू बी ऑनेस्ट. बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ा बिकॉज व्हाटएवर आई वाज गोइंग टू से is rather independent of what happened. बट बहुत ही इंटरेस्टिंग लास्ट 24 आवर्स थे. ऑब्वियसली मतलब एक एज एन इंडियन क्वाइट मिक्स्ड इमोशंस. ऑन वन साइड द न्यूज आर वेरी गुड कि चलो वॉर हैज स्टॉप्ड बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जो खास करके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से है दे वुड बी नोइंग के क्या परिस्थिति है. एंड वॉर इज नेवर इजी स्पेशली फॉर द सिविलियंस. बट कभी कभी हार्ड मेजर्स लेने पड़ते. यू गॉट टू डू इट व्हाट यू गॉट टू डू इट, खत्म बात. तो दैट इज दी अदर साइड. और कहीं ना कहीं मतलब एक पेट्रियट एंड नेशनलिस्ट अंदर का जनक कहता है कि यार एक बार मतलब डेंट आने दो. बट व्हाटएवर इट इज, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ द मार्केट और वो लेंस से डिस्कशन को रखेंगे, पर्सनल भावनाओं को साइड पे रखते हुए. ऑब्वियसली नेशन फर्स्ट पॉलिसी, strongly and very proud of Indian Army, armed forces, the way the government has tackled the entire issue. ये जो स्पाइन दिखाई है इंडिया ने कि बॉस बस नो लॉन्गर वी वोंट टॉलरेट, एब्सोल्युटली कमेंडेबल. मतलब मैं ज्यादा पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं करता बट ट्रस्ट मी, कुड नॉट रेजिस्ट इट. पर्सनली इफ यू आस्क मी, was much required. Killing of innocent civilians in tourist पहलगाम में, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना बहुत जरूरी था. बट लेट्स सी. तो या भारत माता की जय, जय हिंद. संदीप, इन्वेस्टिंग इंडिया, पीयूष, मजा आ गया. चलो let me share the screen. Let me know if screen is visible. I'll get directly jump into the topic. तो आज के डिस्कशन में एक बहुत अहम टॉपिक मैं फिर कहीं ना कहीं रिपीट करने वाला हूँ, वाइकॉफ एक्यूमुलेशन का. और आपको टाइटल से ऑलरेडी हिंट मिल गई होगी कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन रीडिंग प्राइस एक्शन दैट गोज बाय द नेम ऑफ प्राइस शॉक्स. ये समझना बहुत जरूरी है, साइकिल्स समझना जरूरी है एज ऑन 10th में. ब्रीफली द एजेंडा फॉर डिस्कशन. सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि आज हो सकता है कि कुछ व्यक्तिगत पर्सनल ओपिनियन में शेयर करूं, पर्सनल रीडिंग्स में शेयर करूं. इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी आप बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह लीजिए. इट इज प्योरली फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव व्हिच मे बी रॉन्ग. ओके, मैं भी रॉन्ग जा सकता हूं. नथिंग इज टू बी टेकन बाय सेल रिकमेंडेशन. एवरीथिंग दैट आई शेयर ऑन दिस चैनल is only and only for educational purposes. So please consult your financial advisor before any investment decisions. मिसाइल कब छूटने वाली है, मार्केट कब कहाँ जाने वाला है, ये किसी को नहीं पता. हम सिर्फ इंटरप्रेट करना सीख सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा को, और हम ये वही एक्सरसाइज करते हैं. ओके, तो सबसे पहले मार्केट का प्राइस एक्शन रीड करेंगे. प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, भले ही आपको लगे कि मैं रेपिटेटिव हूँ, स्लो जा रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन. ऑब्जर्वेशंस शेयर करूंगा. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जर्वेशंस खास करके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. 3 से ज्यादा एग्जांपल्स, केस स्टडीज दूंगा मेरे पर्सनल फोलियो से, करंटली आल्सो, जहां पे इन लास्ट 10 12 15 डेज मैंने विनर्स को ऐड किया था. इनफैक्ट कुछ एडिशंस मैंने फ्राइडे ही की थी व्हेन आई डिप्लॉयड सिग्निफिकेंट चंक ऑफ कैश. थर्सडे फ्राइडे, बिटवीन वेडनेसडे फ्राइडे, डीप डाइव क्यूएनए. चलिए लेट्स मूव ऑन. तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्राइस शॉक. बेसिकली प्राइस शॉक इज एन इवेंट जो किसी भी कमोडिटी, ये वाले केस में स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स इंडेक्स, उसको एक नीचे धक्का देती है एंड दैट शॉक इज एब्सॉर्ब्ड. अगर वो शॉक एब्सॉर्ब नहीं होता है एंड कंटिन्यू डाउनफॉल चालू रहता है, दैट इज नॉट अ प्राइस एब्सॉर्प्शन, बट दिस इज अ प्राइस शॉक. इसको हम स्टॉक लेवल पे शेकआउट भी कहते हैं. मैं प्राइस शॉक इसलिए कहता हूं बिकॉज शेकआउट्स जनरली मे और मे नॉट ऑकर विद अ पर्टिकुलर इवेंट.
से फॉर एग्जांपल के कुछ अर्निंग्स आ गई, अर्निंग्स नहीं भी आई, शेकआउट हो सकता है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ अ शेकआउट? ये ऐसे ओपन हुआ, नीचे गया और फिर यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ। दिस इज अ शेकआउट, ओके, मे और मे नॉट बी इवेंट ड्रिवन, बट उसका एक सबसेट होता है प्राइस शॉक। सो वेरी सिमिलर, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक, earnings, news, economic और some form of activity और some trigger attached to it. ये वाले केस में geopolitics था। तो price shock behaves something like this, and then it may take up 2-3 days to catch up or even a day to catch up. Okay, तो shakeout का एक subset होता है price shock. Understanding price shocks is very important क्योंकि ये आपको दिखेंगे और आपका दिमाग वो वाले दिन चलेगा नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ना बहुत सारा पैनिक होता है इन एंड अराउंड टाइम। फॉर एग्जांपल आप ये कोविड का चार्ट देखिए, लुक एट द डाउन ट्रेंड एंड अ प्राइस शॉक एंड अ रिकवरी आफ्टर दैट। लुक एट दिस शॉक, एब्जॉर्ब हो गया। दिस इज आई थिंक रशिया यूक्रेन वॉर, ये 2020 है मार्च। दिस इज 2022 मार्च बाय द वे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अ डाउन ट्रेंड, अ शॉक एंड एन एब्जॉर्प्शन। दिस इज रशिया यूक्रेन. You can go and check many other events, by the way, Lehman crisis and lot of other things. आपको ये पैटर्न रिपीट होती हुई दिखाई देगी, ये बिहेवियर। While this is still not a downtrend, but इलेक्शन के रिजल्ट आए थे जून 4 को, शॉक एंड एन ऑब्जॉर्प्शन। तो होप आपको ये शॉक एब्जॉर्प्शन का थीसिस समझ में आ गया कि गिरने के बाद उछल जाता है। Now let us put this understanding in the context of Nifty mid cap. ये by the way Nifty के charts है, but to share charts of cap, small cap, for capacity to fight a shock. So this was a fight back, by the way. Market ने यहाँ पे fight दिया था. This was this is tariff tantrum कहते हैं इसको, by Donald Trump. TTT, Trump tariff tantrum. TTT. Let me just remove all this. A fight. ये नोट करना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये हर बार आपको देखने नहीं मिलेगी। मार्केट ने रेजिलियंस दिखाई, अ स्टॉक, टीटीडी एंड अ फाइट बैक। अब आप देखिए गौर से, ध्यान से देखना, दिस इज द वॉर, जियोपॉलिटिक्स, एंड लुक एट दिस कैंडल. वी विल ड्रिल डाउन फर्दर बाय द वे, ओके. लुक एट दिस कैंडल, ये नीचे खुला था गैप डाउन बिकॉज देयर वाज फायरिंग ऑन बोथ साइड्स, एंड लुक एट द एब्जॉर्प्शन. उसी दिन पे ये एब्जॉर्ब हो गया बाय द वे, ओके. तो उतना कुछ बड़ा, while this is a major shock, आप you would have seen Friday 2-3% portfolios down हुए होंगे, 3-4%, and then surprisingly I closed in flattish green, no profit no loss, थोड़ा सा हल्का नाम के लिए green में था, but I would ignore that, but that is a big observation if you ask me. And what makes this even more special is this bouts of resilience and two shocks. So clearly it has absorbed two shocks in such a short span. Very interestingly, मैंने ये टॉपिक बहुत मतलब रीजन के साथ चुना है. It is not a random discussion that I am choosing, and there is a reason why I have crafted a thumbnail also. Let me go over there in the latest post. Look at this clearly. अब देखिए, मैं यहाँ पे पूरा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मार्केट का बॉटम कोई नहीं कॉल आउट कर सकता. बट इफ यू आस्क मी, are we closer to the bottom? Are we in favor of risk reward right now? The answer is maybe. These are exactly the kind of zones where the risk reward, ये यहाँ पे आपको risk reward favorable नहीं मिलेगा, but these are the zones where risk reward really starts to make slow and steady sense. अभी आप बोलोगे कि जनक भाई यहाँ पे क्यों नहीं बताया, यहाँ पे क्यों नहीं बताया, यहाँ पे क्यों नहीं बताया. बॉस, इफ यू आर अ मेंबर यू नो ऑल दिस. आपको रेगुलरली मेरे मैसेजेस आते रहे होंगे कम्युनिटी पे. बट बिफोर दैट
it is a very good opportunity. I will come to that point also. Okay, how do we get in more depth? But let us quickly revisit the discussion on accumulation. While I have repeated n number of times accumulation, Wyckoff पे बात की है, and this time and again comes so much to the rescue. Trust me, I absolutely love this accumulation framework. ये कहता है कि डाउन ट्रेंड इज फॉलोड बाय प्रिलिमिनरी सेलिंग, पीएस, मतलब एक इनिशियल बाउंड ऑफ सेलिंग होती है, फिर एक सेलिंग क्लाइमैक्स आता है व्हिच मोर और लेस डिफाइंस द जोन ऑफ द बॉटम. Then it is followed by an automatic rally, followed by a second test of the bottom, ST, and then followed by a time correction. ये थोड़ा हाइड कर देता हूं मैं. फिर एक स्प्रिंग आता है जहां पे एक शेकआउट और टाइप ऑफ अ शॉक or a shakeout. Look at this. This is very important. And then it resumes an uptrend. You get a last point of supply. थोड़े बहुत weekends होते हैं. And then you get SOS, sign of strength, followed by consolidation and uptrend. Now let us put together this price action in Nifty's perspective. Okay, बने रहिएगा. Am I making sense? Preliminary selling. Maybe, I don't know. चलिए, सेलिंग क्लाइमैक्स. अब ये कहीं नहीं लिखा कि सेकंड टेस्ट कैन गो बिलो, शॉक कैन गो बिलो. नहीं, दिस कैन बी अ सेकंड टेस्ट. आई डोंट नो. दिस इज ऑटोमेटिक रैली, AR. दिस इज स्प्रिंग or a shakeout or a price shock, whatever you want to call it. Because it is absorbed with ferocity. ये देखिए, jump across the creek. It moved, tried to move out of the Wyckoff accumulation zone, and a classical retest. Am I making sense in reading the accumulation? I don't know. But if you are with me, if you are a student of the market, अगर आप मेरा content पिछले कुछ टाइम से follow करते आ रहे हो, you would be able to read this like back of your hand. Preliminary selling, second test, आप थोड़ा बहुत इसको modify कर सकते हो. That is okay. This is, look at this, sign of strength, whatever you want to call it. But understand the cycle. We don't need to be exactly right. We have to understand directionally and read the signs. ये बात दोस्तों मुझे अब नीचे बताइए कमेंट में. इज इट मैजिकल और नो? द एबिलिटी टू कनेक्ट सो मेनी डॉट्स. दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई लव प्राइस एक्शन सो मच. बॉस, मजा ही आता है. ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ प्योर टेक्निकल गाय, so you would not be able to read the businesses well. If you are a pure fundamental guy, maybe you are stuck in a very bad environment. But if you are able to combine both, let's come to observations. But I won't tell you the magic. You have to, आपको मेरे साथ जर्नी में बने रहना होगा. बस मैं इतना कहना चाहूंगा. अब देखिए, कुछ और ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर करता हूं, और जो मैंने, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पहले शेयर नहीं किए. I have shared it so many times. Again, work of one of the Twitter handles that I follow, Swinka Sultan. I think Chirag Kedia is his name. Look at this. ये आप यहाँ पर देखिए. Look at the bottom. Almost कितने? Only 12% of stocks above 200 EMA, and now even the stocks above 200 EMA are going up. Just 18% stocks about 10 EMA. Just 20% stocks about 10 EMA. यहाँ पे भी ये अवेलेबल है, even within this. Look at this. This is an oversold territory. Just इतना भी आपको अगर आप रीड करोगे, while इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर जाना नेसेसरी है, but this is one of the indicators, one of the points to crack. अगर आप स्मार्ट हो, यहाँ पे आपको above 50 EMA में, look at this, higher highs. So more and more stocks are gaining strength. The breadth is improving. One, let's see more and more analysis. Let us not just rely on one factor. So let's look at now Nifty mid cap, small cap 400. And for better visibility, I'm going to bar charts, candle chart, sorry. और यहाँ पे आर्ली चार्ट का प्राइस एक्शन देखते हैं. So between last 3-4 days, I did my significant allocation, if I'm not wrong. Look at the price action. ये कब की बात है? यहाँ पे देखिए, somewhere here
if 2-3 days ago market till 1 PM, जब तक इंडिया ने आई थिंक काउंटर अटैक नहीं स्टार्ट किया था, market was pretty much okay, and then it suddenly tanked. Okay, and even in middle of war the candles are so strong. So look at this, ये यहाँ पे, so this is the exact zone where I started deploying. यहाँ पे everything was healthy, ये पूरे range में I deployed, and then seeing this price action I decided to deploy. ये अर्ली चार्ट्स रीड करने में कितना कुछ पता लगता है. Now if you ask me, this is the next logical step, but this shock, this gap, ये देखो gap down absorb हो गया यहाँ पे. हालांकि इसके जरिए मैं सिर्फ बाय सेल नहीं करता, so this is not my कि ये मैं आर्ली चार्ट देखते रहता हूं, बट ड्रिल डाउन करो एंड दिस गैप हैज बीन फिल्ड. निफ्टी में क्या हालत है? निफ्टी में तो बहुत अच्छे से ये देखिए कंसोलिडेशन चल रहा था यहाँ पे, एवरीथिंग वाज परफेक्टली ओके, निफ्टी वाज इनफैक्ट इवन स्ट्रॉन्गर, बट यहाँ पे उतना अच्छा बाउंस नहीं है compared to broader market. Nifty mid cap small cap, the bounce is quite good. This is early candles, and that's exactly where you use cash as a percentage of strategy. आप कैश रेज कर सकते हो इन these zones. Look at this. If you are a member, आपको पता होगा ये वाले जोन के अराउंड मैंने ऑलरेडी लिखना स्टार्ट कर दिया था. So let me show that. Remember, a massive underrated skill is not giving back the gains. तो वहां पे मैंने अपने थॉट्स शेयर कर दिए थे. कमिंग बैक टू द चार्ट्स, लुक एट दिस, द प्राइस इज ये कितना हीटेड था यहाँ पे. इफ यू आस्क मी, वी वर इन दिस जोन, ये वाला जोन था आई थिंक, honestly 80-84, majority stocks are just flying, anything and everything is flying, and that's where the mean reversion starts kicking in. आप वापस एवरेज की तरफ जाते हो. अगर 100 में से 90 स्टॉक्स 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो गए, मतलब बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, कभी ना कभी वो कोलैप्स होगा वापस एवरेज पे, और बहुत ज्यादा सब गिर गया है, तो डेफिनेटली एक टेलविंड आपकी फेवर में होगा. मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वी माइट बी इन अ बेयर मार्केट, बुल मार्केट, साइडवेज मार्केट, बट अंडरस्टैंड द प्राइस डायनामिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग टुगेदर. ये रीड करना जरूरी है. मार्केट ब्रेथ, आपके कैश लेवल्स, योर पोर्टफोलियो इज द बिगेस्ट इंडिकेटर, अर्ली प्राइस एक्शन, और आगे हम विनर्स प्लेबुक भी देखेंगे. फॉर एग्जांपल, लेट मी शो समथिंग. सो लुक एट दिस, बाय द वे आई हैव दिस. ओके, तो ये मैंने इन्वेस्ट करके रखा है काइनेसिस. लुक एट दिस, यहाँ पे आप वाइकॉफ एक्यूमुलेशन क्लियरली दिख रहा है. द रिजल्ट्स हैव बीन गुड आल्सो. इनफैक्ट एक दिन पहले जब सीज फायर अनाउंस भी नहीं हुआ था, मैंने कहा था कि प्राइस एक्शन फ्राइडे का बहुत अच्छा है. दिस इज एग्जैक्टली 1 डे अगो, even before the ceasefire was announced. तो clearly आपको कट ऑफ होना होगा कि what is going on in the outside world and you become the student of the market. अब सवाल आता है कि जनक भाई, आपने एक ब्रॉड मार्केट एनवायरनमेंट रीड करना सिखाया है जिससे हमारी विन रेट बढ़ेगी. What will the winners look like? We will talk about that. But before that, मैं आपके साथ अप्रैल का डीप डाइव शेयर कर दूं. हर महीने हम एक स्टॉक और थीम को पकड़ते हैं और उस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं करता हूं. फॉर एग्जांपल, अप्रैल में मैंने एक बिजनेस कवर किया था जो सेमीकंडक्टर, डिफेंस और एआई के लिए प्रॉक्सी का काम करता है. बिफोर दैट देयर वाज अ डिजिटल इंडिया बिजनेस, अ न्यू एज टेक कंपनी एंड अ रिन्यूएबल्स कंपनी. मई में भी एक ऐसी ही कंपनी पे मैं कवरेज करने वाला हूं, व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थीम टू लार्जर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल. मैं एंड एंटायर सेक्टर, बाय द वे, सब सेक्टर इज मूविंग इनटू स्टेज 2. तो इसका दौर आ रहा है वापस ये इंडस्ट्री का. पॉइंट बीइंग, ये सब अवेलेबल है मेरे डीप डाइव के कम्युनिटी मेंबर्स के लिए. आपको मेरे चैनल पे जाना है. यू गो टू माय चैनल. यहां पे आप देखिए, होम स्क्रीन में जाइए. आपको यहां पे ज्वाइन बटन मिलेगा. व्हेन यू क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन, you will be able to join my deep dive community at 299 rupees per month. अब एक महीना ट्राई कीजिए, देखिए, समझिए. रेगुलरली मैं फंडामेंटल्स के वीडियोस करता रहता हूं, प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स, ऐसे जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं. आई थिंक पिछले संडे मैंने 10
सेटअप्स शेयर किए थे जो मैं ट्रैक कर रहा हूं अगले हफ्ते के लिए, तो मैं अटेम्प्ट करूंगा मैं कल भी और चार्ट्स निकालूं। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं, मंडे बिकॉज ऑफ द होल सीज फायर ऑफ वॉर जब रुक गया है तो एक मैसिव फोमो किक इन होगा, मैसिव मैसिव रैली होगी। देयर विल बी लॉट ऑफ फोमो दैट आई सेंस। आई मे बी रॉन्ग बट जनरली वॉर जब ऐसे सीज फायर होता है तो पीपल वांट टू जंप इनटू द सेफ एनवायरनमेंट। आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप ले लीजिए, इट इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट प्लीज फोमो अपने इमोशंस को काबू में रखिएगा, मार्केट मौके बहुत देगा। ओके, दैट इज द होल पॉइंट। होमवर्क मैं देते रहता हूं, ये सब अवेलेबल है मेरी कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ। सो आशा करता हूं ये वीडियो के बाद मेरी डीप डाइव की कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। मे का वीडियो डेफिनेटली वर्क इन प्रोग्रेस है, बाय मंथ एंड में निकालने की कोशिश करूंगा। इट इज स्टिल 10-15 डेज अवे while the business is finalized, scripting और shooting और सब बचा हुआ है। Now, once the deep dive update is out, again रिपीट करता हूं, आशा करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग ये कम्युनिटी का फायदा उठाएंगे। In the next phase of the discussion, let me share some of the winners playbook from my portfolio currently that I am holding. Winners price action. अब मैंने यहाँ पे इंटेंशनली सेबी ने जो गाइडलाइन दी कि आप प्राइस का डेटा शेयर नहीं कर सकते, तो मैंने प्राइस शेयर नहीं किया कहीं भी। आई हैव नॉट शेयर द प्राइस, मैंने इंटेंशनली प्राइस को रिमूव कर दिया है। दिस इज द चार्ट ऑफ केपीआर मेल एंड दिस इज द बिगेस्ट विनर आई हैव इन माय होल्डिंग राइट नाउ। अब यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखिए, लुक एट दिस। ये बाय द वे व्हाइट लाइन इज 200 और 40 वीक ईएमए एंड दिस ब्लू लाइन इज 21 डे ईएमए। तो जिस तरह वेलोसिटी से ये वापस 40 वीक ईएमए के ऊपर गया, ये गिरा नहीं, ब्रेकडाउन आया नहीं यहाँ पे, इट मूव्ड इनटू द टेरिटरी अबव 40 वीक ईएमए, हायर लोज, और यहाँ पे ब्यूटीफुली कंसोलिडेट हुआ। दिस इज द जोन वेयर आई एंटर्ड एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 to 30% गेन पे हूं अभी यहाँ पे, 30% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये येलो लाइन मेरी स्टॉप लॉस थी, बहुत छोटे रिस्क पे मुझे रिवॉर्ड मिला एंड आई प्लान टू राइड इट। अभी आई वुड बी वेटिंग, अभी डेफिनेटली ओवर हीटेड है फॉर स्विंग ट्रेडर्स, बट लुक एट द वॉल्यूम एक्शन। अर्निंग्स उतनी खास नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, अर्निंग्स आई एम स्टिल मेकिंग अप माय माइंड, बट यहाँ पे एफटीए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ एंड लॉट ऑफ टेक्सटाइल स्टॉक्स वर इन फ्लेवर, बट क्लियरली दिस वाज द विनिंग प्लेबुक फॉर मी। लेट मी शेयर द सेकंड एग्जांपल, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज। आई थिंक ये मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीम में भी कवर किया था। लुक एट दिस डबल बॉटम followed by a flag and pole consolidation. Look at this double bottom and a consolidation. यहाँ पे I think मैंने एंट्री ली थी, if I'm not wrong, with this as the stop loss, ये yellow line, and then it has moved up again. It is consolidating. I will look to pyramid here, though I have pyramided. So basically I take 1 or 2% and then I pyramid another 1/10. So 1/10 of the original holding, and then I keep nibbling. Okay, so this I will look to pyramid. This I have pyramided to some extent. I will add more. Abhi the only challenge over here is it has just crossed 40 week EMA, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सप्लाई आ सकता है। Look at the volumes, earnings पे हुआ ये सब. So another back support and all the key moving averages are going up now. The third winner. वाई यहाँ पे उतने बड़े गेन्स नहीं है और मैंने इसको मल्टीपल प्लेसेस पे एक्यूमुलेट और पिरामिड किया है। लुक एट द प्राइस एक्शन, ये सब हो रहा था 40 वीक ईएमए पे। दिस इज वेयर आई एडेड फर्स्ट, इट ब्रोक आउट, इट कंसोलिडेटेड, आई एडेड द सेकंड, आई मूव्ड माय स्टॉप लॉस अप हियर एंड नाउ इट इज 7-8% इन गेन इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। दिस इज नजारा। We are not talking about price here anywhere. आपको प्राइस एक्शन का स्टूडेंट खुद बनना पड़ेगा, प्राइसिंग, स्टॉप लॉसेस, रिस्क मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगा। देयर आर एम्पल वीडियोस अवेलेबल, बट दिस इज व्हाट अ स्ट्रक्चर टिपिकली लुक्स लाइक। अब मैं बताता हूं बहुत रीसेंट एडिशंस, ये वीक के बहुत रिसेंटली थर्सडे फ्राइडे, कपल ऑफ एग्जांपल्स। एनडीआर ऑटो, आई थिंक इसकी अर्निंग्स यहां पे अच्छी आई थी। लुक एट दिस, आर यू एबल टू सी? मस्त कंसोलिडेशन चल रहा है। दिस इज एग्जैक्टली द जोन वेयर आई एडेड फर्स्ट।
let me zoom in for you. ये ट्रेंड लाइन टूटी, दैट वाज माय बिगेस्ट क्यू. यहाँ पे कंसोलिडेशन पे मैंने पहली एंट्री ली, एंड देन ये येलो लाइन जब ब्रेकआउट हुई ना, दिस वाज द फर्स्ट एंट्री, दिस, एंड इनफैक्ट मैंने और ऐड किया यहाँ पे जब फ्राइडे को ये वाला रेजिस्टेंस टूटा. नाउ आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस थर्ड एरिया. यहाँ पे आई वुड बी इंटरेस्टेड इन द थर्ड पिरामिड. दिस इज हाउ, एंड इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, माइनर प्रॉफिट्स. द फिफ्थ, अब बहुत ज्यादा यहाँ पे एंट्री नहीं ली, नो प्रॉफिट नो लॉस, बट आई वुड स्टिल शेयर द एग्जांपल व्हिच इज दैट ऑफ विष्णु केमिकल्स. कैसे शेकआउट, और ये पूरे टाइम पे ना आप देखो फ्लैग एंड पोल, एंड यहाँ पे वॉर चल रहा था बाय द वे, बट द प्राइस डिड नॉट कोलैप्स. 40 वीक या 200 डेमा पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा था. इट वाज टेकिंग सपोर्ट हियर. So this is the spot, exact spot. This is the exact spot where I entered. दो थोड़ा बहुत तो शॉक आएगा ही आएगा. ओके, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी पिरामिड किया मैंने, थोड़ा बहुत पिरामिड, बहुत नहीं. ये वाले दिन पे फ्राइडे, बिकॉज इट वाज प्रॉमिसिंग, एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर दिस ब्रेकआउट. यहाँ पे आई वुड टेक मोर एंट्री, then subsequently over here, and then see if something like this can happen. I don't know. Just एक रफ मैप पे I might exit also. मेरे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, तो अभी यहाँ पे अगर मुझे पूछो तो I would be looking at this zone as a stop loss. नजारा NDR ऑटो में maybe at this line now. Nazara already defined. The rest I already discussed. So this is how I read the winners. All these five are in my current holdings in between 1 to 3%, but again not a buy sell recommendation. Hope आज की लाइव स्ट्रीम आपको वर्दी लगी and you liked the entire discussion that I had. ऐसे एग्जांपल्स आप चाहते हो तो मैं शेयर कर सकता हूं. I would be more than happy. Now friends, the forum is open for question and answers. Point being, मैं प्राइस का डेटा शेयर करना अवॉइड करूंगा, but let us see if there are few good questions coming in. So shout out to all the members: Sri Rama, Investing India, Piyush, Life Unfolds here, Piyush again, Rohan, shout out to you. Rohan is saying looks like chemical sector is slowly. Yes, so we just discussed last week. I think Rohan, you are there, right? Last week was the flavor of chemicals industry. So yeah, results are coming in good. I'm tracking this space a lot, but I'm happy कि आपने भी ऑब्जर्व किया. अच्छा लगता है यार जब आपके साथ वाले रीड करते हैं सिचुएशंस को. Any questions? I will wait for 5 minutes. It's 8:29. Okay, if there are no more questions, we can call it off early. Janbrut Pharma. Janbrut. कुछ गलत लिखा है क्या? Maybe you want to revise, I think. Okay. Like you played KPR? Yes. SP Apparels. SP Apparels. Let me check. If I can just pull out the charts. SPL. यार कंपनी तो बड़ी अच्छी लगी थी मेरे को, but somehow I was not able to. Wow, superb. मतलब I can't be more happy. The only reason I was skeptical here, I'll tell you. So while I would have seen the charts, I am trying to get it SPL for you on the charts. And why I was not excited over here, I'll tell you. But again, nothing hard and fast. चीजें गलत हो सकती है, सही हो सकती है. So there is no hard and fast. Everybody has their own strategy. So ये देखो. Hope my screen is visible. Huh? So look at this. While this was still a consolidation, ये 40 वीक EMA के नीचे था. तो ये थोड़ा सा डर लगता था, but the volumes and the way it moved up, I think I would be
कीपिंग इट इन रडार। आगे देखेंगे कंसोलिडेशन पे। वी ऑन एप्पल इंडिया रिजल्ट्स देखना बाकी, आई वुड नॉट कमेंट। एसपीआईसी रिजल्ट्स, एसपीआईसी स्पाइस जेट के रिजल्ट्स आए क्या? लेट मी नो इफ आई एम मिसिंग समथिंग। आई एसपीएल होगा, आई डोंट नो। एसपी अपैरल्स के रिजल्ट्स आए क्या? नहीं तो यू माइट। हाय गुड इवनिंग दुष्यंत। जेन बर्फ, बाप रे, जेन बर्फ भी नहीं, जेन बक्ट है, वो नाम ही अलग है कुछ आए यार। बहुत छोटी कंपनी है, 400 करोड़ की, बहुत मार्केट कैप बहुत छोटा है। सेल्स ग्रोथ उतनी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ है। व्हाट इज द कैश फ्लो सिचुएशन? 53% ऑफ पब्लिक के पास है, सिर्फ 46% प्रमोटर्स के पास है। देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग। कैश फ्लोज ओके ओके, उतने कुछ खास आ नहीं रहे हैं। रिजर्व्स ओके, रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग। 14p, एक बार को तो स्टडी कर सकते हैं, नथिंग अगेंस्ट इट, बट कैश फ्लो टू एबिटा कन्वर्जन इज वेरी पुअर इन कंपैरिजन टू अदर्स। आप ये देखिए, सिर्फ एबिटा का 22% कैश फ्लो में जाता है, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का सिर्फ 22% एबिटा में जाता है। सो अगेन, सो नॉट द, मतलब यहाँ पे नहीं, आई डोंट नो। PSU banks, Piyush, if you ask me, not really, though I think I like the setup of Union Bank. I might try to pull out if there is some learning over there. But PSU banks is something, मतलब ठीक है सब। No यार, I would still a long way to go. It is still consolidating. Kowai Medical is a strong setup. Southern Petrochem. Let me see if I can pull the setup and see. Petrochemicals somehow ना दो तीन नजर में तो आ रहे हैं। The setup is quite choppy over here. BSE पे ही listed है ये। Southern SPIC, sudden jump in sales, ये क्यों हुआ? Very difficult यार, no investor presentations, बहुत comment करना difficult हो जाता है। I have no clue, Rohan. I don't know if this is true also. Parties have denied it. So why Sumitomo Group is taking care? I would stay away from all the speculations if you ask me. Axis Gates price action थोड़ा खराब हुआ है, if you ask me genuinely. I had to exit it because of the poor price action, but रखा है मैंने इसको साइड पे। I'll tell you what happened with me over here. Trying to pull the chart also. Just give me a moment. Let me remove the price information. So this is Axis Gates. ये देखिए, यहां से ये रन एंजॉय किया, यहाँ पे स्टॉप हिट हुआ, यहाँ पे आई डिसाइडेड टू एंटर टू प्ले दिस शेक आउट, बट इट डिड नॉट वर्क। यहाँ पे वापस मेरा स्टॉप हिट हो गया, एंड राइट नाउ आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग दिस। लेट्स सी, स्टिल द प्राइस स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्ट्रॉयड। ये 40 वीक ये में अभी भी ऊपर जा रहा है, बट लेट अस सी इफ इट कैन मेक अ बेस ओवर हियर, एंड आई एम ट्रैकिंग एक ट्रायंगल जैसा बने। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। GRSC, Rakesh, I have it in the folio. The structure is okay. JK, I haven't studied. Yasho Industries, in fact, tracking it very closely. No views on the charts. Anup Engineering, yes, really like the price action that is there. In fact, as full disclaimer, Anup Engineering में मैंने just Friday को ही बहुत end में add किया इसको, because the way it gave me a low cheat entry. I would share the setup with you.
let me remove the price and then share it. Just hold on. I am not interested in sharing the price. Let me know if my screen is visible. Look at this. ये ऐसे कंसोलिडेट कर रहा था. एक ब्यूटीफुल कप, एक छोटा सा हैंडल जैसा, and this is where a low cheat entry according to Mark Minervini can be sparked. Let us see. So एक tracking position यहाँ पे बनाई. Kilburn, I think I like the business, but somehow price action is all over the place. Oriental Rail Info I haven't tracked. IIFL Finance, no, because I haven't tracked. So चलिए, lot of discussions are going around stock specific. Somehow I would like to avoid that. If there are any questions around the business or reading price action or some example, जैसे I think somebody was asking RSI के बारे में, if I'm not wrong. Sandeep, were you asking me on the RSI divergence? RSI divergence के मैं examples जरूर मैंने पुल आउट किए थे. आई इंश्योर कि मैं उसको वर्क करूं. उस पे कहां पे लिखे थे? हाँ. सो एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे सिखाना चाहूंगा, वो है आरएसआई डाइवर्जेंस का. लेट मी शेयर द चार्ट्स ऑफ ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक. लुक एट दिस. ये देखो कितना ब्यूटीफुल आरएसआई डाइवर्जेंस है. वाइल आरएसआई डाइवर्जेंस था, मैं इसको सिर्फ ओनली इंडिकेटर के तौर पे नहीं लूंगा. Generally, it has to be combined with other price action also. Look at the way RSI divergence is panning out. Look at this triple divergence. प्राइस गिर रहा है, आरएसआई स्ट्रेंथ पकड़ रहा है. तो जनरली बॉटम्स एंड टॉप्स पे आरएसआई डाइवर्जेंसेस बहुत कम आते हैं. लेट मी पुल आउट सम मोर एग्जांपल फॉर यू. ESAF एटम करके एक अच्छा एग्जांपल है. Though I'm not sure of the business completely, but we can just study from the perspective of studying the RSI divergence. 1, 2, 3, and look at the RSI behavior in the corresponding period. Look at this. So it can be a very healthy indicator to tell कि just are we closer to the bottom in the short term. अब इसको आप मार्केट एनवायरनमेंट, बिजनेस सबके साथ कंबाइन कीजिए एंड यू वुड बी रियली लीथल इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड. ओके, इनफैक्ट आप देखोगे तो CCL ये मेरे पास है एंड इनफैक्ट आई वाज कंसीडरिंग शेयरिंग दिस एज एन एग्जांपल. ये गैप प्ले था, बट लुक एट दिस, द प्राइस केप्ट फॉलिंग. उतना स्ट्रॉन्ग एग्जांपल नहीं है ये, but still an example. And RSI in the same period kept rising up. उतना अच्छा एग्जांपल नहीं है. फॉर द सेम रीजन मैंने इसको पहले शेयर नहीं किया. बट लुक एट दिस, दिस इज हाउ यू कैन रीड the divergences. Janak bhai, I try to attend your videos due to family. I'm not able to fully learn trading view. Your live streams have helped, but can you provide a master class on how to use trading view? Maybe अभी उतना शार्ट टाइम नहीं है. So but I really want to do it, Piyush. Honestly अभी मैं उतना कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ because of my family and other work commitments as well. Axis Kids promoter holding decrease हो रही है again. Obviously मतलब let me see. I think if that is the case I would have shared it earlier. So not a major decrease, 0.2-0.3%. Pledging is something that needs to be checked कि exactly pledge क्यों हो रही है and what is the percentage. So while yes, आप आंख बंद नहीं कर सकते उस पे, clearly one of the factors that you have to consider. ठीक है, चलो, I think it is good time to wrap up the live stream. If there are no more questions, we'll wait for a couple of minutes. तब तक के लिए दोस्तों मेरे क्लोजिंग थॉट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं. बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके. प्राइस साइकिल्स याद है मैंने सितंबर अक्टूबर में इतने सारे वीडियोस शेयर किए थे.
around the tops, bear market, correction is coming, how to read the market environment. This is our first video जो मैं cover कर रहा हूँ. Are we looking at the start of a new bull run? Okay, so अब आने वाले वीडियोस बहुत दिलचस्प होंगे. होमवर्क करते रहिएगा, कम्युनिटी एक्सप्लोर करते रहिएगा. यू विल सी लॉट मोर थॉट्स दैट आई विल कीप शेयरिंग ऑन माय कम्युनिटी टैब. तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए, बी पार्ट ऑफ डीप डाइव कम्युनिटी. एट द एंड में यही कहना चाहूंगा, सबसे ऊपर आता है अपनी हेल्थ, फैमिली, हैप्पीनेस, फिर आता है इक्विटी इन्वेस्टिंग, उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए. स्टॉक आज ए है तो कल बी होगा, ये नाम बदलते रहेंगे, बट इक्विटी कर्व हमारा ऊपर जाते रहना चाहिए. भगवान का साथ है. जय श्री राम कहना चाहूंगा, जय हिंद कहना चाहूंगा. और इसी के साथ अब आपसे आज की शाम को विदा लेते हैं. अगले हफ्ते दोस्तों फिर मिलेंगे. तब तक के लिए हैप्पी संडे. अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. कल मैं एक छोटा राइटअप लिखने की कोशिश करूंगा. चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम.